Bismillahirrahmanirrahim. Well, students, last time we discussed how to purify water, and this topic is about uses of water. 5.5 uses of water. Water is used almost in every sphere of life. It is used in homes. घरों में इस्तेमाल होता है. घरों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल. Large quantity of water is used in homes. For washing के लिए इस्तेमाल होता है, क्लीनिंग के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, बाकी चीज़ें साफ करने के लिए, दांत मुंह वगैरह वज़ू करने के लिए, ब्रशिंग टीथ के लिए, फ्लशिंग टॉयलेट एक्सेट्रा, कुकिंग एंड ड्रिंकिंग, पीने के लिए भी, कुक करने के लिए, बिसाइड्स परफॉर्मिंग मैनी अदर टास्क्स, नहाने के लिए भी इस्तेमाल होता है. सो वाटर, यूज ऑफ वाटर इज ट्रिमेंडसली इन होम्स. The second use of water is in agriculture. This is also one of the big uses of water because plants need water to grow. 88% of fresh water is used in fields for growing plants, crops, fruits, veg. यानी जो जितना भी फ्रेश वाटर आपके पास अवेलेबल है उनमें से 88% जो है वो इस्तेमाल में आता है एग्रीकल्चर में, खेतों में इस्तेमाल होता है, दरख्तों में, फलदार दरख्तों के लिए, सब्जियों के लिए, क्रॉप्स के लिए, गंदम की काश्त की अपने एटसेट्रा एटसेट्रा. इट्स यूज फॉर these crops. So the first use is in homes, the second use is agriculture. Then water is also used for making electricity. बिजली पैदा करने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं हम. The potential energy of water is used to run propellers of turbines. Turbines जो है उसके blades के ऊपर, propellers के ऊपर पानी को बुलंदी से गिराया जाता है. उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से वो जो है ना ब्लेड्स उसके या प्रोपेलर्स घूमना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से वो जनरेटर को चलाता है और फिर बिजली पैदा होती है. सो अपार्ट फ्रॉम यूजिंग वाटर इन होम्स एंड इन एग्रीकल्चर, वाटर इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी. The fourth use of water is in industries. Almost every industry uses water. Water is used in industries for मेकिंग बेवरेजेस. जो आप मुख्तलिफ़ किस्म के आम के जूस, सेब के जूस एक्सेट्रा बेवरेजेस इस्तेमाल करते हैं. बेवरेजेस एंड फूड इंडस्ट्री यूज़ वाटर एज अ रॉ मटेरियल. तो उसमें स्प्राइट की बोतल में पानी होता है, कोक की बोतल में पानी होता है, नेस्ले के जूसेस में भी पानी होता है, सब जगह पे पानी इस्तेमाल होता है. सो बेवरेजेस एंड फूड इंडस्ट्री यूज़ वाटर एज रॉ मटेरियल. फैक्ट्रीज यूज़ वाटर टू क्लीन वॉश द मेटल. फैक्ट्री में, इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं मेटल सर्फेसिस को साफ करने के लिए. हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, ऑयल रिफाइनरीज, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ये सारे पानी को इस्तेमाल करते हैं फॉर कूलिंग पर्पसेस. सो दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ वाटर. देयर आर मिसलेनियस यूजेस ऑल्सो. इसके अलावा ये पानी इस्तेमाल होता है. मसलन आपने एक स्पोर्ट्स पार्क बनाया है जहाँ पे आप बोटिंग करते हैं या फिशिंग करते हैं, तो उसके लिए आर्टिफिशियल झील बनाएंगे आप. उस आर्टिफिशियल झील या पॉन्ड के लिए आपको पानी चाहिए होगा. सो इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्विमिंग. स्विमिंग करने के लिए भी आप इस्तेमाल करते हैं, सेलिंग करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. जो आपके क्लब्स के अंदर ये स्विमिंग पूल्स होते हैं, दे ऑल्सो कलेक्ट वाटर. सो वाटर इज यूज इन स्विमिंग पूल्स. वाटर इज यूज फॉर द आर्टिफिशियल पार्क्स, फॉर हैविंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी, फॉर सेलिंग. इट इज़ यूज फॉर अदर वाटर स्पोर्ट्स ऑल्सो, बोटिंग के लिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ये मिसलेनियस यूजेस में आ जाते हैं. आई विल गो ओवर दिस पॉइंट्स अगेन. यूजेस ऑफ वाटर, it is used in homes, and in homes they are mainly used in the kitchen and in the washrooms. A large quantity of water is used in homes for washing. You wash your clothes, you wash your bodies, you wash your utensils. For cleaning, in order to clean certain things, you use water. For brushing teeth, for doing wuzu, for flushing toilet, you use water. Cooking and drinking purposes, you use water, besides performing many other tasks. So water is mostly used in kitchens and bathrooms to the maximum. And this is used in the homes. Then water is used, 88% of fresh water is used in agriculture for growing crops, for growing fruits, for vegetables, etc. Plants need water to grow. 88% of fresh water used in fields for growing plants and crops, fruits, vegetables. Hydroelectricity, water is also used for producing electricity, as a source of producing electricity. In that you collect water and you make it fall from a height. The potential energy of the water is used for turning the propellers or turbines
and the turbines in turn, then run the generator, electricity is produced. In industries, water is used in the food industry, in the beverage industry as a raw material. Factories also use water to clean, wash metal surfaces. Heavy mechanical complexes, oil refined, they use water. Nuclear reactors use water for cooling purposes. And then there are miscellaneous uses, like in swimming pool you use water, like in artificial parks where you have sailing facilities, or you have water sports, you use water over there also. Now, how to conserve water? This topic is very important. How to conserve? Number one, कि पानी को आप कम से कम इस्तेमाल में लाएं ताकि ज़ाया ना हो. Turn off the tap when brushing teeth. मतलब दांत आप साफ कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं और टूटी खुली हुई है. Do not turn on the cap. Do not turn on the tap when you are brushing your teeth. उसको खोलें और बंद कर दें. उसको जितना पानी इस्तेमाल करना कर दें, फिर उसको खोलें बंद करें, खोलें बंद करें. टर्न ऑफ द टैप व्हेन ब्रशिंग टीथ. टू यूज टम्बलर्स. बेहतर है कि आप किसी बर्तन में पानी डाल के उसमें से इस्तेमाल कर लें. डोंट वॉश फ्रूट वेजिटेबल्स इन द बोल. सब्जी धोनी है, फल धोना है, टूटी के नीचे खोल के इसको मत धोएं, बिकॉज ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. उसके बजाय आप उसको इस्तेमाल करें किसी बर्तन में डाल के और उसमें धो लें. डोंट वॉश डिशेज अंडर रनिंग वाटर. इसी तरीके से बर्तन धोने हैं ख़वातीन ने घर में, तो रनिंग वाटर के नीचे ना छोड़ें उसको, टूटी खोल के उसको ना वॉश करें. उसके बजाय बर्तन में पानी इकट्ठा करें, उसमें बर्तन डालें और धो लें. यूज़ वॉशिंग मशीन्स विद फुल लोड. यानी इसका मतलब यह है कि यानी कि एक कमीज़ आपने डाली, 2 कपड़े डाले, 4 कपड़े डाले, 12 पाउंड की आपकी मशीन है और 2 बर्तन कपड़े धोने के लिए आपने मशीन चला दी, उसने फुल पानी का लोड लिया और 2 कपड़े से जब धोए. सो दिस मीन्स दैट यू शुड यूज़ वॉशिंग मशीन द फुल लोड. जितना भी उसके ऊपर लोड प्रेस्क्राइब्ड है कि ये 12 पाउंड की है तो उसके मुताबिक कपड़े डालें, 8 पाउंड की है उसके मुताबिक डालें, ताकि आप कुछ बर्तन कपड़े इकट्ठे होने के बाद धोएं, एक एक करके छोटे छोटे कपड़ों को मत धोएं. यूज वॉशिंग मशीन विद फुल लोड. वाटर लॉन्स इन मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू मिनिमाइज इवेपोरेशन ड्यूरिंग डे टाइम. अगर आपने अपने लॉन्स को पानी देना है तो दोपहर के टाइम पर पानी ना दें, बिकॉज दोपहर को इवेपोरेशन बड़ी होती है और बजाय ऐसे कि पानी ज़मीन जज़ब करे वो हवा में चला जाता है. सो यूज़ water. If you want to water your lawns, use it, water them in the morning, because in the morning the sun, the temperature is not much and the sun is not shining, so the water, whatever you will put, you'll go into the ground and the benefit will be given to the plants that you have planted over there. Similarly, if not in the morning, then do it in the afternoon. Check block leakages. If there are some leakages in your home, like टूटी में पानी लीक हो रहा है या किसी और जगह से पाइप से लीक है, प्लीज़ ब्लॉक देम ताकि पानी वेस्ट ना हो. Paper mills, oil refineries, chemical industries, heavy mechanical complexes, nuclear power plant should conserve water by reducing water use. तो ये ट्रिपल आर का सिस्टम यूज़ कर लें. रिड्यूस वाटर यूज़, पानी के यूज़ को कम से कम करें. रिसाइकल वाटर, जो पानी आपने जो वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया है उसको दोबारा साफ़ करके उसको रिसाइकल करके फिर इस्तेमाल करें. एंड री यूजिंग वाटर, पानी को दोबारा इस्तेमाल में लाएं, रीयूज करें उस पानी को, बार बार उसको ज़ाया ना करें. सो दीज आर 3 methods, 3R method which is used for conservation. 1, reduce the use. 2, recycle. 3, reuse it. Now we come to the exercise, and this exercise is about just hold on, let me go and bring the book. I have forgotten to bring the book. Let me bring the book, then I will. Okay, I brought the book now, and we'll start the exercise. Question exercise is on page 54, and it is of the 5th chapter of chapter number 5. The first question of chapter number 5 on page number 54 is complete each of the following sentences by writing the correct terms. Large sheets of ice has called glaciers. I have written it over here, glaciers. The process of removal of impurities is known as purification. Rivers, lakes and ponds are sources of fresh water. Harmful and unwanted substances in water are known as pollutants.
Toxic matter, question number 1, part 5. Toxic gases in the air react with rainwater to make acid rain. So these are the 5 answers to the first question. The second question also has 5 subparts, and circle the correct answer in the following. Drinking water sources can be contaminated by it. He has given 4 options. Option Bravo is correct. Run off from fields and roads. Why is runoff water from the fields and roads is contaminated? Because in the fields you put fertilizers and you put the pesticides, and when water comes of rainwater and overflows, then it carries those pesticides and fertilizers with it, with the result that the water becomes contaminated. Similarly, on the road also there are quite a number of toxic matters. There is oil in it. On the roads there's all kind of muck also, and dirt also, and then metallic pieces, etc. So this water, running water, when it goes from the road, it carries with its impurities. Question number 2, part 2. What percentage of Earth's water supply is fresh water? What percent? The answer is alpha, 3%. We can get the purest form of water by distillation process. Why is distillation process the purest form? Because it can, in distillation process, the suspended impurities as well as the soluble impurities can be removed by it. Question number 2, part 4. Heavy mechanical complexes use a large amount of water for washing purposes. Question number 2, part 5. Which one is not the source of water pollution? Rainwater coming is not a source of water pollution. Because the first option, human waste, is a source, industrial waste is a source, fertilizer is a source, except the option number 4. Question number 3, part 1. Why is fresh water important? Why is fresh water? See answer on page 47. Where is most of the fresh water found? For this, please see page number 48. Question number 3, part 3. Why is most of the Earth's water salty? Page 48 gives you the answer. Question number 3, part 4. If water runs downhill to the seas, what are some ways that fresh water becomes polluted? Look at page 49. Why clear water is not necessarily safe to drink? See page 49. Question number 4. Explain how water is most essential part of life. Question number 4. Explain how water is most essential. Please see page 47. What makes our water impure? Page 49. Question number 6. How can we preserve water? Page 53 has the answer. Question number 7. Describe a few methods to clean water. Page 51. And question number 8 is complete the concept map. Talks about water, gives the one is salt water, the other is fresh water. Fresh water is found in the surface of the water and underground also. On the surface you have the lakes, ponds, rivers and glaciers. And underground, of course, you can take it out with the help of water pumps. With this, we come to the end of the chapter, and I would like you to make your notes and solve this exercise also. And for any difficulty, please talk to me on cell number 0336 5473312. Thank you very much.